Good morning, friends. So, welcome to the Prelims Booster session. First of all, a very happy Republic Day to all of you. So, now let us see all our topics today. पहला टॉपिक है लिविंग विल। तो ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है कंडीशन होती है कि मजिस्ट्रेट का अप्रूवल चाहिए होता है लाइफ सपोर्ट को विड्रॉ करने से पहले किसी भी टर्मिनल इल पेशेंट से, उसको रिमूव कर दिया है। तो बेसिकली उन्होंने अपनी 2018 की खुद की जजमेंट जो है पैसिव यूथनेशिया से रिलेटेड उसको मॉडिफाई किया है। तो कोर्ट ने क्या बोला है कि जो रिक्वायरमेंट होती है दो मेडिकल बोर्ड बनाने की वो तो रहेगी, लेकिन जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी बोर्ड बनाने के लिए। ये जो बोर्ड्स हैं इसको हॉस्पिटल्स खुद बनाएंगे। बस जो है डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर का एक नॉमिनी डॉक्टर जो होगा वो इसका मेंबर होगा। और मेडिकल बोर्ड को 48 आवर्स के अंदर जो है वो डिसीजन लेना होगा किसी हर केस के अंदर, ठीक है। और लिविंग विल को भी जो है वो सिंप्लीफाई कर दिया है कोर्ट ने, और कहा है कि एक जो लिविंग विल है उसको नोटरी या फिर गजटेड रैंक ऑफिसर जो है वो अटेस्ट कर सकते हैं। तो पहले तो देखते हैं यूथेनेशिया क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि लिविंग विल क्या होता है। तो यूथेनेशिया जो है वो एक तरह से किसी भी पर्सन को जो है अलाउ करना कि वो मर सके विदाउट सफरिंग, ठीक है। एक्टिव यूथेनेशिया में क्या होता है कि कोई टर्मिनली इल पेशेंट है, वो बहुत सफ़र कर रहा है, तो उसके लिए हम उसको एक लीदल ड्रग दे देते हैं ताकि वो जल्दी से मर जाए, उसको जो है वो ज़्यादा पेन ना सहन करनी पड़े। पैसिव यूथेनेशिया में क्या होता है कि हमने बस उसकी जो जो उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम था उसको हटा लिया। हमने उसको खुद नहीं मारा, हमने बस उसका जो है वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा लिया ताकि जो है वो अपने आप जो है वो मर जाए, ठीक है। तो ये एक तरह से इंडिया में पैसिव यूथनेशिया तो अलाउड है, लेकिन एक्टिव यूथनेशिया अलाउड नहीं है। तो अब हम देखते हैं लिविंग विल क्या होता है। तो जब कोई भी पर्सन, जब नॉर्मल पर्सन जो है वो अपनी लिविंग विल बना सकता है कि जब कभी ऐसा, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए मेरी लाइफ में कि मैं टर्मिनली इल हो जाऊँ, मैं कोमा में चला जाऊँ, और आप मुझे ज़िंदा रख रहे हो अगर आप किसी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे, तो आप उससे बेटर जो है वो मुझे पैसिव यूथनेशिया जो है वो करने देना, आप मुझे मरने देना, ठीक है। ये होती है लिविंग विल। आप जीते हुए जो है अपनी मौत को डिसाइड कर रहे हो कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए तो मुझे तड़प के मरने से बेटर जो है वो आप मुझे पैसिव यूथनेशिया से मरने देना। तो उसको जो है बनाया जा सकता है, लेकिन जो है ऑफ कोर्स अप्रूवल लेना पड़ता है, जो है टेस्ट कराना पड़ता है। अब इंडिया में जो है वो कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज़ किया कि एक पर्सन के पास राइट टू लाइफ की तरह राइट टू डाई विद डिग्निटी भी है, ठीक है। इसीलिए पैसिव यूथनेशिया को अलाउ किया गया है और लिविंग विल को भी एग्जीक्यूट करना अलाउ किया गया है। अब जो है एक्टिव यूथनेशिया तो इंडिया में इलीगल है, उसको क्राइम माना गया है। सिर्फ वही लोग जो ब्रेन डेड हो चुके हैं उन्हीं का सिर्फ जो है लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है वो हटाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेम्बर्स, अगर उन्होंने लिविंग विल नहीं रखी है तो। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ऑलिव रिडली टर्टल्स। इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अर्ली जनवरी में ही लोकल्स ने फोटोग्राफ लिए हैं और देखा कि 70 ऑलिव रिडली टर्टल्स जो हैं वो डेड पाए गए काकीनाडा और अंतर्वेदी गोदावरी रीजन में, ठीक है। तो ऑलिव रिडली टर्टल्स जो हैं ये स्मॉलेस्ट और मोस्ट अबंडेंट सी टर्टल्स हैं वर्ल्ड अराउंड द वर्ल्ड पाए जाते हैं, और इनकी यूनिक मास नेस्टिंग होती है जिसको हम अरीबाडा कहते हैं, ठीक है। तो ये वल्नरेबल स्पीशीज़ हैं IUCN की रेड लिस्ट में। इनकी जो है माइग्रेटरी राउट पर इनको बहुत से थ्रेट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि टर्टल अनफ्रेंडली फ़िशिंग प्रैक्टिसेस करते हैं कुछ जो है फ़िशरमैन। फिर इनकी पोचिंग भी की जाती है मीट के लिए, शेल के लिए, लेदर के लिए और इनके एग्स के लिए। और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की वजह से भी जो है इनकी जो है बीचेस में जो नेस्टिंग हो रही है उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो जो ये आपके ऑलिव रिडली टर्टल्स हैं ये नवंबर और दिसंबर के बीच में ओडिशा के कोस्ट पे आते हैं और कई बार ये अप्रैल मई तक रहते हैं, वहाँ पर ये नेस्टिंग करते हैं। और इनको थ्रेट्स क्या हैं, ब्रीडिंग ग्राउंड जो हैं काकीनाडा और अंतर्वेदी के पास, वहाँ पर जो है मॉर्टेलिटी देखने को मिली है। और जो डिस्चार्ज होता है एक्वा पॉन्ड्स का, जो एफ्लुएंट्स का डिस्चार्ज हो रहा है, उसकी वजह से जो है ये ऑलिव रिडली टर्टल्स जो है वो मर रहे हैं, ठीक है। तो ऑलिव रिडली टर्टल्स को जो है ऑपरेशन ऑफ फिशिंग बोट्स की वजह से भी जो है इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में इनको खतरा हो रहा है, इनको जो है वो नुकसान हो रहा है। तो अब क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं इंडिया द्वारा। शेड्यूल 1 में इनको डाला गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। फिर जो है वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया जो है उन्होंने और जो है फिशरमैन कम्युनिटी के साथ मिलके मास नेस्टिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है प्रोग्राम भी चलाया है फेंसिंग का ऋषिकुलिया रूस्ट्री में, आपके उड़ीसा में। फिर जो है टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस भी जो है उड़ीसा गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिए हैं कि जो है फिशरमैन जो है उनको यूज़ करेंगे ताकि जो है टर्टल्स उसमें से निकल सकें। ऑपरेशन ओलिविया भी चलाया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा हर साल, ताकि ऑलिव रिडली प्रोटेक्शन जो है वो की जा सके।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नोरो वायरस। सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। केरला हेल्थ डिपार्टमेंट ने कंफर्म किया है कि 2 केसेस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन नोरो वायरस के क्लास 1 स्टूडेंट्स में जो है वो एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिले हैं। उससे जो है एब्डोमिनल इलनेस होता है। इसको हम विंटर वॉमिटिंग बग भी कहते हैं और ये वायरस जो है वो लो टेम्परेचर्स में भी सर्वाइव कर लेता है। क्योंकि ये आपके यूएस में जो है नॉर्वॉक में सबसे पहली बार देखा गया था, तो इसलिए इसको नॉर्वॉक वायरस भी कहते हैं। इससे बचने का सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है कि क्लेanलीनेस रखो। तो जनरली सिम्टम्स में इसके वॉमिटिंग होती है, नोजिया, डायरिया, फीवर, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, लेथार्जी, इवन स्टमक और इंटेस्टाइन की इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है। जनरली ये सिम्टम्स 1 से 2 दिन तक रहते हैं और बहुत ही कम केसेस में ये सीरियस होते हैं सिम्टम्स। ट्रांसमिशन कैसे होता है? अनक्लीन या कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के ट्रांसफर से होता है। तो अगर कोई डायरेक्टली कंज्यूम कर लेता है इन्फेक्टेड फूड, तो वो इससे जो है वो एक तरह से पीड़ित हो सकता है। तो केयरफुली वॉश करो फूड को, हाई टेम्परेचर पर कुक करो, उससे जो है इस वायरस से बचा जा सकता है। अब ये नोरो वायरस जो इन्फेक्शन है बहुत ही फ्रीक्वेंट हैं हाई इनकम कंट्रीज़ में, लेकिन इंडिया में इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मॉलिक्यूलर क्लाउड्स। साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक इंटरनेशनल टीम ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं उन्होंने जो है देखा है कि कई तरह की उनको आइस देखने को मिली है डार्केस्ट और कोल्डेस्ट रीजन्स ऑफ मॉलिक्यूलर क्लाउड में। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने प्रूव किया है कि इवन कॉम्प्लेक्स प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल्स जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ हैं, वो भी फॉर्म्स हो सकते हैं इन मॉलिक्यूलर क्लाउड्स के अंदर। तो अब हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर क्लाउड्स होते क्या हैं। तो बेसिकली ये इंटरस्टेलर क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट हैं जिनके अंदर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। मोस्ट कॉमन मॉलिक्यूल कौन सा फॉर्म होता है? हाइड्रोजन का। ठीक है। तो ये क्लाउड्स जो हैं इनमें बहुत कम टेम्परेचर होता है। ये फ्यू लाइट ईयर्स से लेके 600 लाइट ईयर्स अवे तक हो सकते हैं अर्थ से। और इनका जो सेंट्रल रीजन होता है वो बिल्कुल ही हिडन होता है क्योंकि उसके वो आसपास उसके डस्ट होती है। ये एक तरह से रॉ मटेरियल बनते हैं स्टार्स और प्लैनेट्स के फॉर्म होने का। ठीक है। अब डार्क नेबुला क्या होता है या डार्क क्लाउड क्या होता है? जो सबसे डेंस पार्ट होता है बिगर मॉलिक्यूलर क्लाउड का, उसको हम डार्क नेबुला कहते हैं। यही वो रीजन है जहाँ से स्टार्स फॉर्म होते हैं और जनरली हाइड्रोजन और डस्ट पार्टिकल्स मोस्टली इस एरिया में देखने को मिलते हैं। अब सोलर मास क्या है? सोलर मास बेसिकली मास ऑफ द सन है। तो अबाउट 3,33,000 अर्थ जितना सोलर मास है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जोरावर लाइट टैंक। सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक डीआरडीओ और लार्सन एंड ट्यूब्रो द्वारा डेवलप किए गए जोरावर लाइट टैंक को जो है वो अभी आने वाले टाइम में रोल आउट किया जाने वाला है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने जो है 354 ऑफ सच टैंक्स जो है वो प्रोक्योर करने के लिए मंजूरी दे दी है ऑलरेडी। इंडिजिनसली डिज़ाइंड और डेवलप टैंक है ये। डीआरडीओ ने लार्सन एंड ट्यूब्रो के साथ मिलकर बनाया है। इसका वेट लेस देन 25 टन्स होता है और ये इसका जो है हाई पावर टू वेट रेशियो होती है। अब जोरावर कौन है जिनके नाम पर ये इस टैंक का नाम रखा गया? जोरावर सिंह कालूरिया जम्मू के राजा गुलाब सिंह की आर्मी में थे और मिलिट्री जनरल थे ये। और क्योंकि इन्होंने हिमालय में लद्दाख, तिब्बत, बाल्टिस्तान और स्कार्दू एरिया का जो है कॉन्क्वेस्ट किया था, इसलिए उनको ऑनर किया जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं टीथर ड्रोन्स। ये भी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है टेक्निकल और कमर्शियल बिड्स मांगी हैं आर्मी को के लिए। आर्मी रोबोटिक म्यूल्स, जेट पैक सूट्स और टीथर ड्रोन्स लेना चाहता है, तो लेनी चाहती है। तो टीथर ड्रोन्स होते क्या हैं? टीथर मतलब वायर्ड। ठीक है। तो मतलब ये कनेक्टेड होते हैं ग्राउंड के साथ। तो इससे क्या हुआ कि आपको जो है चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है इनको। ये आपके जो है पावर सप्लाई ले रहे हैं। अनमैन्ड एरियल व्हीकल हैं, ग्राउंड के साथ कनेक्टेड हैं, बेस स्टेशन के साथ कनेक्टेड रहते हैं और इसको रिमोटली भी चलाया जा सकता है। टेक्निकल और ह्यूमन एरर से भी बचे रहते हैं बिकॉज ये फ्रीली जो है उड़ नहीं रहे हैं। इसको नीचे से गाइड किया जा रहा है, इसलिए जीपीएस नेविगेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनका फ्लाइट टाइम भी बहुत लंबा होता है क्योंकि ये वायर से कनेक्टेड हैं। ठीक है। तो इनकी जो है मूवमेंट थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड होती है एज़ कम्पेयर टू फ्री फ्लाइंग ड्रोन्स। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इनर कोर ऑफ द अर्थ। ये भी आपके जो है ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली एक स्टडी कह रही है कि इनर कोर ऑफ द अर्थ जो है उसने अर्थ की डायरेक्शन की तरह से जो है घूमना बंद कर दिया है और इनर कोर जो है वो एक तरह से उल्टा घूम रहा है। ठीक है। या फिर उसकी स्पीड कम हो गई है। तो अब जो है इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ जो है जिसको हम इनर कोर कहते हैं, ये एक सॉलिड मेटालिक बॉल है आयरन की बनी हुई। इनर कोर जो है वो सॉलिड है लेकिन आउटर कोर जो है वो लिक्विड है। जो है इनर कोर और आउटर कोर की जो बाउंड्री है उसको हम लीमैन सिस्मिक डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं। अब 3 लेयर्स ऑफ जो अर्थ हैं उसको भी देख लेते हैं। क्रस्ट को जो है वो आउटसाइड लेयर ऑफ अर्थ है जो बसाल्ट और ग्रेनाइट की बनी है। मेंटल जो है वो आपका क्रस्ट से नीचे का एरिया है, 2900 किलोमीटर थिक है। ये आयरन और मैग्नीशियम रिच रॉक सॉलिड रॉक से बना है। ऐसे ही कोर है
जो आपका सेंटर ऑफ द अर्थ है निकल, आयरन और मॉल्टन रॉक से बना है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जीवन रक्षक पदक अवार्ड्स। गवर्नेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सोशल इश्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो है जीवन रक्षक पदक सीरीज़ ऑफ अवार्ड्स अनाउंस कर दिए हैं। ये एक पर्सन को मिलते हैं जिसने किसी और पर्सन की जान बचाई हो। इसको इवन पोस्ट ह्यूमसली भी जो है वो अवार्ड को दिया जा सकता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल वोटर्स डे। ये टॉपिक भी आपके जो है गवर्नेंस के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो 13th नेशनल वोटर्स डे मना रहा है 25 जनवरी को। अब ये जो डे है ये हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है सिंस 2011, बिकॉज इसी दिन ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1950 में बनाया गया था। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is living will. This topic is important for your social issues. So Supreme Court has recently removed the condition that a magistrate's approval would be required for withholding of life support to a terminally ill person. So basically, the Supreme Court has modified its own order of 2018 on passive euthanasia. So the court has ruled that there would be requirement of two medical boards, but the rule which mandates that the district collector would set up the review board has been done away with. The boards will now be constituted by the hospital, and there would be just one nominee doctor of the district medical officer in this review board. And the medical board is supposed to take all the decisions of every case within 48 hours. And the court has also made the process of making a living will simplified. Now the will can be just attested by notary or a gazetted rank officer. So what is euthanasia? Euthanasia is basically a process in which you hasten the death of a patient so that you can prevent him from further sufferings. So there are two types of euthanasia. First, of course, is active euthanasia, and the second is passive euthanasia. In active euthanasia, you are actively killing that person by administering a lethal drug into him. But in passive euthanasia, you are just withholding the life support system or withdrawing the life support system, which is necessary for maintaining life. So, what is a living will? Is basically a person has a right to draw a living will in which the person is giving a directive that in case I go into a terminally ill stage or I go into a stage of coma, then you should not be you should not be forcing me to cope up with the pain. You just withdraw the support and let me die through passive euthanasia. So the person is himself willingly deciding the fate of himself. Okay, so is euthanasia legal in India? Of course, Common Cause versus Union of India case of 2018, the Supreme Court said that the person has a right to die with dignity, like the person has a right to life with dignity. So, but only passive euthanasia was allowed by the Supreme Court, and active euthanasia remains illegal. So the next topic is olive ridley turtles. This topic is important for your environment section. So since early January, a group of locals have photographed as many as 70 olive ridley turtles who have been found dead near Kakinada and Antarvedi region of Godavari near Andhra Pradesh. So these olive ridley turtles are the smallest and most abundant of all sea turtles found in the world. They are best known for their unique mass nesting called aribada. They are vulnerable species, and they have several threats along their migratory route, like turtle friendly unfriendly fishing practices are being done. They are being poached for meat, shell, leather and eggs. And also the development and exploitation of nesting beaches for ports and tourist centers are also a threat to them. So these olive ridley turtles generally arrive at Odisha coast between November and December, and they stay on until April and May for nesting. And there are several threats to these turtles, like the breeding grounds between Kakinada and Antarvedi. This region is discharged with effluents from the aqua ponds, and this becomes a threat to these olive ridley turtles. Similarly, fishing boats which operate in this ecologically insensitive area or rookery has been a big threat to these turtles. So several steps have been taken by India, like Schedule 1 protection have been given to them. Worldwide Fund India has also fenced with of course in partnership with fishermen community. They have fenced off nesting areas in Rushikulia rookery near Odisha, and
Odisha government has also made it mandatory for trawlers to use the turtle excluder devices so that turtles can escape while retaining the catch from the for the fishermen. Operation Olivia is also being run by Indian Coast Guard each year to for which is a protection program for these turtles. So the next topic is norovirus. This topic is important for your social issues. So Kerala Health Department has confirmed 2 cases of gastrointestinal infection norovirus in class 1 students of Ernakulam district. So these group of viruses cause abdominal illness, and this is also known as winter vomiting bug, and it is also named after Norwalk because it was first found in Norwalk, that is in USA, and cleanliness is the only way to avoid this virus. So the most common symptom is vomiting. Apart from that, nausea, diarrhea, fever, abdominal cramps, and lethargy can also happen. Generally, we can also observe stomach and intestinal inflammation, and these symptoms generally last for about 1 to 2 days, and it really gets serious. So how does it get transmitted? So unclean and contaminated food and water is the carrier of norovirus, and the infection generally spreads from direct consumption of infected food. All food items therefore should be carefully washed and cooked at high temperatures. These infections are more frequent in high income countries, and it is not as common in India as in many other places. So the next topic is molecular clouds. This topic is important for your science and tech section. An international team of astronomers have recently announced the discovery of different ices in darkest and coldest regions of a molecular cloud. So the researchers have used James Webb Space Telescope to prove that even complex prebiotic molecules can be formed in the depths of cold, dark molecular clouds. So molecular clouds are basically interstellar clouds of gas and dust in which molecules can form, and it is the most common one, of course, is hydrogen. And these clouds have very low temperatures. They are about few light years to up to 600 light years away from us. The central regions of these clouds are completely hidden from the view by dust, and the raw material of stars and planets also are derived from these molecular clouds. So what is the dark nebula here? So dark nebula is the very dense part of this bigger molecular cloud, and these are the regions from where new stars are formed, and they mainly consist of hydrogen and dust particles. So about solar mass is basically the mass of the sun. It is about 3,33,000 earths. So the next topic is Zorawar light tank. This topic is important for your security section. As per a recent report, DRDO and Larsen and Toubro developed Zorawar light tank is under fabrication, and it will be rolled out very soon. Defense Acquisition Council has already given the approval for procurement of 354 of such tanks. They are indigenously designed and developed. It has been built by DRDO in collaboration with Larsen and Toubro. And if we look at the features, this tank weighs less than 25 tons, and it has a high power to weight ratio. Why is it named after Zorawar? Because he was a military general of Jammu's Raja Gulab Singh, and he is honored for his conquests in the Himalayas, including for Tibet, but Ladakh, Baltistan, and Skardu region. So the next topic is tethered drones. This topic is also important for your security section. So Ministry of Defense has recently sought technical and commercial bids to add to the army uh, army robotic mules, jetpack suits, and tethered drones. So what are these tethered drones? So basically these are the unmanned aerial vehicles, but they are tethered to the ground. Basically they are connected to the ground via wire, and they are connected to a base station on the ground. They can be operated remotely also to perform specific tasks, and they are perfect for data capturing and telemetry. They also reduce technical and human error and crashes in flight because they are connected with a base station, so they do not even require any GPS navigation. They have longer flight times as compared to a freely flying battery operated drone, and the only challenge with it is that there is restricted movement because it is a tethered drone. So the next topic is inner core of the earth. This topic is important for your geography section. So as per a recent study, inner core of earth seems to have stopped spinning in the same direction as the rest of the planet, and it is this inner core is the innermost layer of the earth. It is a solid metallic ball which is made of iron. Inner core is solid,
and the outer core is a liquid. The boundary between inner core and outer core is the Lehman seismic discontinuity. And what are the three layers of the Earth? The first, of course, is the crust, which is the outside layer of the Earth, and it is made up of basalt and granite. The mantle is the layer which is below the crust, and it is up to 2,900 kilometer thick. It is made up of hot, dense iron and magnesium-rich solid rock. The core is divided into inner and outer core, and it is made up of nickel, iron, and molten rock. So the next topic is Jeevan Rakshak Padak Award. This topic is important for your social issues. So President of India has recently approved the conferment of Jeevan Rakshak Padak series of awards for 2022, and this is given to a person for meritorious act of saving the life of a person, and it can also be conferred posthumously. So the next topic is National Voters Day. This topic is important for governance section. So Election Commission of India is celebrating 13th National Voters Day on 25th January because on this very day, the Election Commission of India was founded in 1950. So since 2011, we celebrate this day as a National Voters Day. So these were our topics for today. Again, wishing you a very happy Republic Day, and we'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.